Hello students, welcome to my YouTube channel Integrated Physics Studies IPS. एथिरे मु ऑलरेडी प्लस टू सेकेंड ईयर सिलेबस कंप्लीट कर सारी एबे मु प्लस थ्री CBCS फिजिक्स ऑनर्स जीई आ MSc फिजिक्स ऑनलाइन क्लासेस रो वीडियोस अपलोड करुच्ची जदि भल लगिला ताले वीडियोस को लाइक कर देबा और चैनल को सब्सक्राइब कर देबो यू कैन शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स आल्सो इट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन पई बेल आइकन को एठी ऑल रे सेट कर देबो तापरे वीडियोज रो क्लैरिटी बढ़ावा पई गो टू सेटिंग्स क्वालिटी एडवांस उपरे क्लिक करी यू कैन इंक्रीज द रिजोल्यूशन सबू वीडियोज पाई पीडीएफ नोट्स मु पठेबी जोटा एठी ड्रॉप डाउन लिस्ट को क्लिक करी यू कैन गेट द लिंक फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन बॉक्स तापरे मोर चैनल नेम को क्लिक कले सबू वीडियोज को मु यूनिट वाइज एच पार सिलेबस सजाई की रखिथिबी व्हिच यू कैन गेट फ्रॉम द प्लेलिस्ट एठी सर्च करि परिबो ओके थैंक यू हेलो स्टूडेंट्स आज रो टॉपिक रे हमें किछिटा प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन देखिबा बेस्ड ऑन द मोमेंट्स ऑफ इनर्शिया सो एथिरे हमें moments and products of inertia bahar kariba in some of the simple cases of rigid bodies like your hemisphere, rectangular parallelepiped, then cube. So here we will see that all the products of inertia will vanish when one of the axes of the body lies along the symmetry axis. Tale let us first see the moments of inertia of uniform hemisphere about two axes gote hela axis of symmetry ଆଉ gote hela about an axis lying in the base perpendicular to the symmetry axis. So yaku jodi ame figure re bujiba you see here left side figure this is our hemisphere. Okay, this is our hemisphere and the axis of symmetry is lying along the z axis and here x and y axis are two axes which are perpendicular to the symmetry axis and lying along the base. Okay, so first हमें symmetry axis which is the z axis, so say axis रे हमें moment of inertia बाहर करिबा we will use the spherical polar coordinates. So I z z यार value तो already तमे पाइथिलो. Okay, so here as you are using the spherical polar coordinates, so x रो value हला r sin theta cos phi, y हेगला r sin theta sin phi आउ z रो value हला r cos theta. So याकू पुट करिवो सॉल्व कले देखिवो एतिकी एक्सप्रेशन आसीबो. ओके, ता छोड़ा एटी हमें थीटा फाई आउ आर जो तीनटा स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट नउचु ता पई लिमिट लगेबा आर पई हला 0 टू आर कैपिटल आर होची रेडियस तापरे थीटा रो लिमिट हला 0 टू पाई बाय 2 और फाई रो लिमिट हला 0 टू 2 पाई. ओके, and remember here dv is the volume element. Okay, we are taking the volume integral so that eta asibo sin theta d theta d phi then r square dr. Okay, ei हिसाब रे यार वैल्यू टा आसीबो. अच्छा, सो याकू सॉल्व जदी करिवो फर्दर it will give you 2 by 5 mr square. एटी कैपिटल m हे गला mass of the hemisphere and remember one more thing एटी रो जो हमें लिखुछु this is nothing but the volume density. So एटी mass हे गला the volume of the hemisphere into the volume density and here जेहेतु आमे गोटे हेमिस्फीयर नउछु सो 2 by 3 pi r cube हला यार वॉल्यूम स्फीयर रो वॉल्यूम होची 4 by 3 pi r cube एटा होची हेमिस्फीयर. ओके, सो आधा रहिबो स्फीयर थारु से जा भी हो about z axis आमे मोमेंट ऑफ इनर्शिया पाई गला. Then let us calculate the moment of inertia about the x axis in the similar way. Okay, we put the value of y and z and calculate it further. तो सिंपल कैलकुलेशन अछि इंटीग्रेशन रो देखिबो अगेन यार वैल्यू आसीबो 2 by 5 mr square and by symmetry I xx जार वैल्यू आमे पाइला 2 by 5 mr square यार वैल्यू also equal to I y हबो. ओके, सिमेट्री द्वारा तापरे एबे देखिबा गोटे rectangular parallelepiped as you can see in the figure we have taken a rectangular parallelepiped. So एपटे आमर x एक्सिस एपटे z एपटे y एक्सिस रोची along x y z आमे रेस्पेक्टिवली तारो साइड नहीं जाउछु सपोज स्मॉल a b c. ओके, ताले एबे मोमेंट ऑफ इनर्शिया आमे बाहर करिबा सपोज अबाउट z एक्सिस ताले I z z again we put the value. Now the limit will change. Okay, dx dy dz पकेला आमे रेस्पेक्टिवली 0 टू a 0 टू b 0 टू c पडिला यार लिमिट गुडा. ओके, so यार वैल्यू आसीगला 1 by 3 m a square plus b square. Okay, and here m is nothing but the mass which is equal to its density into
the volume. Okay, rectangular parallel pipette মানে all sides দৈর্ঘ্য প্রস্থ উচ্চতা তিনটা যাকর গুণফল মানে ABC is the volume. Okay, again now from the symmetry ଆମେ ପାଇ परिबा IXX ଆଉ IYY ର value. Okay, so देखो IXX ହେଇଗଲା 1/3 m b square plus c square ଆଉ IYY ହେଇଗला 1/3 m a square plus c square. So ये तीनटा हमरो आसीगला moments of inertia तापर products of inertia. So आमे जानिछु फर्स्ट कथा हैला IXY equal to IYXY interchange कर देले. So let us calculate the value. यारो जो formula हमें यूज कला value आसीगला -1/4 MAB. Similarly IXZ equal to IZX -1/4 MAC. आउ finally IYZ equal to IZY equal to -1/4 MBC. Okay, so नोटा जाको हमें पाइगला याको तमे डिटरमिनेंट रे भी बा मैट्रिक्स रे भी लिखि पारो. Then moving on to the next problem, जो ऊपर आमे रेक्टेंगुलर पैरेलल पाइपेट कथा देखुतिला तार होची एटा फर्दर स्पेशल केस. एथिरे कोन कहूची गुटे क्यूब पई पचारची मोमेंट ऑफ इनर्शिया बाहर करो. ताले जदी गुटे क्यूब हे गला that means all the sides will be having equal length. So A equal to B equal to C. Okay, सेटा को हमें एठी यूज करिबा. Okay, so 0 to A 0 to A 0 to A तीनटा जाको x y और z रो लिमिट पडिला. ताले IXX रो वैल्यू आसीगला 2/3 m a square. Similarly IYY IZZ रो वैल्यू मध्ये सेम हबो 2/3 m a square. Okay, आउ तापरे एबे प्रोडक्ट्स ऑफ इनर्शिया जदी बाहर करिवो IXY यार वैल्यू देखिवो -1/4 m a square. माने सेही केस रे जेमती आस्तला खाली डिफरेंस हला A equal to B equal to C आमे नै गला. ओके, तापरे याकू देखो जेमती कहउतली गोटे मैट्रिक्स रे आमे लिखि देला. So this is our inertia tensor. Okay, now clearly the axes which are specified along the edges are not principal axis. So हमको यदि प्रिंसिपल एक्सिस बाहर करिवार अछि ताले एई जो ऊपर मैट्रिक्स टा पाइला एथिरु हमें यार डिटरमिनेंट करिकी ओके यार आइजेन वैल्यू बाहर करबा को पड़िबो -i डायगोनल रे हमें पुट कला एंड वी सॉल्व इट टू गेट द आइजेन वैल्यू. सो तीनटा आइजेन वैल्यू बा रूट्स आसीबो ए डिटरमिनेंट रो i1 i2 i3 found out to be 1/6 ma square 11/12 ma square and 11/12 ma square. ओके एटा चेक करिवो. सो एठी देखो i2 आ i3 समान अछि. दैट मींस डिजेनेरेसी रहउची बिटवीन द रूट्स i2 and i3. That means the remaining root correspond to an axis of symmetry. माने ए जो i1 equal to जो आसिला it is corresponding to the axis of symmetry. Okay, in order to find that axis we put I equal to i1 in equation. Okay, I equal to i1 put कला रेस्पेक्टिवली तीनटा जाको इक्वेशन को हमें लिखि देला. ओके, तापरे यार वैल्यू एबे पुट करिबा. ओके, i11 पाई आउ i पाई रेस्पेक्टिव वैल्यूज हमें पुट कला. सिमिलरली बाकी जत्ते सब कोएफिशिएंट अछि तार वैल्यू हमें पुट करिकी we try to solve it in order to get the value of omega 1 2 3 and finally it will give you the same value of every frequency, that is omega 1 equal to omega 2 equal to omega 3 habo. Hence the principal axis corresponding to I1 which is equal to 1/6 m a square must lie along the diagonal of the cube. And the degeneracy जोटा हमें देखिला second और third भितरे means that any axis in the plane perpendicular to the diagonal is also a principal axis. Okay, and once an axis is chosen in this plane the remaining axis is the mutually perpendicular one. So the principal axes are always mutually perpendicular to each other. So एटा हला किजरा हमें देखिला problems and solutions based on the moments of inertia. Thank you.